Abhishek getting us the big news of the hour. 4 workers have been rescued safely. Abhishek continues to tell us what's going on there. Abhishek, over to you. सबसे बाहर निकाल लिया गया है और कुछ ही देर में यहां से बाकी के 3 और वो 4 मिला के अब उन्हें निकालने का काम शुरू कर दिया जाएगा। देखिए हरकत बढ़ गई है, एक्शन शुरू हो गया है, एम्बुलेंस खड़ी हो गई है और टनल में लगातार काम शुरू हो गया है। पहला शख्स जो बाहर निकल के शर्मवीर आया है उसका नाम विजय है और बाकी के 3 को निकाल लिया गया है और उनके भी नाम अब कुछ ही देर में पता चल जाएंगे और उन्हें सबसे पहले एम्बुलेंस जो बाहर खड़ी हुई है उस ग्रीन कलर की एम्बुलेंस में उन्हें बाहर लेके आना शुरू कर दिया गया है। So one of the 4 is named Vijay and he's trying to get to the bottom of more details. But you do see a lot of activity there. On the left side of your screens, the ambulances are parked right outside the mouth of the tunnel. And a lot of people really around the ambulance, whether or not, some of these workers who've now been pulled out, they're being transported to hospitals via these ambulances. That's something we're going to try and find out. But yes, those are the live visuals we continue to keep up with. Remember, these people have been in this collapsed portion of the tunnel for 17 long days. And after those 17 long days, after having faced those difficult conditions today, finally, they've been pulled out. They're being pulled out. 4 of them have been pulled out already via the wheeled stretchers, with ropes attached to them by the help of NDRF officials who are currently at the spot. Our sharp focus, of course, remains on how smooth the entire operation is going to be. The NDMA officials have made it clear that the entire process could last for about 4 hours, anywhere between 3 to 4 hours. It may take the entire night, they say, to finish the ongoing rescue operation. But the good news being that the technical challenges have been overcome. So that's the big relief at this point in time. And you see the kind of crowds gathered there really. Rakesh is joining us with the latest. Let's cut across. की जांच होगी, इसके बाद शायद उन्हें आगे की ओर रवाना किया जाए। लेकिन ये तस्वीर जो भी एम्बुलेंस के अगल बगल थे उन्होंने ताली बजाकर अभिवादन किया है। यानी जिस घड़ी का इंतजार था पिछले 17 दिनों के बाद वो घड़ी अब आ चुकी है। इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अपनी सफलता की इबारत लिखने लगा है और इबारत ऐसी जो हिंदुस्तान के इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगा। एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन जिसमें तमाम ट्विस्ट एंड टर्न्स आए, एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन जिसने तमाम मुश्किलें देखी, एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन जिसने जिंदगी में उम्मीद तो बनाकर रखा लेकिन उसमें इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स आए कि कभी लोगों को निराशा भी हुई लेकिन हौसला जज्बा नहीं टूटा। एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन जिसमें शुरुआत के 12 दिनों में जो श्रमिक अंदर फंसे हुए थे उनके पास ना तो कम्युनिकेशन का कोई साधन था, ना तो खाने पीने का कोई साधन था। वो मुश्किल हालातों में सरवाइव करते हैं और 10 दिनों के बाद और 10 दिनों के बाद उनके पास पहला कम्युनिकेशन होता है। फिर उन्हें फूड आइटम्स पहुंचाया जाता है। थोड़ा सा जूम आउट करिए और फिर उसके बाद दिखाइए कि हलचल क्या हो रही है, अगल बगल लोगों की क्या हलचल है, क्या बॉडी लैंग्वेज है। हरिंदर जरा तस्वीरें दिखाइए। एनडीआरएफ के लोगों ने इस एम्बुलेंस को घेर के रखा हुआ है और ऐसा फ्रेम बनाइए कि पीछे की भी जो हलचल है वो दिखाई दे। फिलहाल देखिए सबका ध्यान फिलहाल सबका ध्यान एक और पीछे की तस्वीर जूम इन करिए हरिंदर। पीछे जो छोटी एम्बुलेंस थी देखिए वो बाहर आते हुए जो रैम के बगल में खड़ी की गई थी। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी तस्वीर, ऑपरेशन जिंदगी। थोड़ा सा जूम आउट करिए, ताली बजाकर लोग दौड़ रहे हैं उस एम्बुलेंस की ओर और ये तस्वीर बता रही है कि ये ऑपरेशन जिंदगी सफलता की पहली कहानी लिख चुकी है। श्रमिकों का बाहर निकाला जाना शुरू हो चुका है। इस वक्त घड़ी में बज रहे हैं 7:57 मिनट पर मुस्कान की यह पहली तस्वीर और निश्चित तौर पर उन 41 श्रमिकों के परिवारों ने जो टाइम्स राउंड ऑफ भारत के जरिए लगातार इस तस्वीर को देख रहे हैं, हमारी लगातार नॉन स्टॉप बिना ब्रेक के कवरेज को देख रहे हैं, उन्हें यह निश्चित तौर पर सबसे बड़ी राहत की खबर मिली होगी। और जरा जूम आउट करके पहले बाहर की तस्वीर दिखा दीजिए हरिंदर, जरा जूम आउट करिए, एकदम बाहर निकालिए, फ्रेम को बाहर निकालिए। ये बगल में देखिए सारी एम्बुलेंसेज स्टैंड बाई मोड पर, सभी एम्बुलेंसेज को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। 1200 मीटर का ये स्ट्रेच रोड देखिए, करीब 30 एम्बुलेंसेज parked right outside the opening of the tunnel. There are about 10 more ambulances which are parked at a distance is what our reporters have been telling us. Now, this most certainly is big news coming in, great news coming in for the family members of those who were trapped for the last 17 years, for the entire nation that was literally praying for the safe return of these 41 brave men. And like Abhishek just highlighted and Rakesh has been telling us,
we could see some of those men wearing yellow helmets, some of the rescue officials clap and cheer for the ones who have made it out of the tunnel. 4 workers have been pulled out in the latest, remember, after 17 long days, and nothing less than an underground prison, as we've been highlighting. The rescuers, remember, the last few hours were clearing the final few meters of the debris using the rat hole mining technique, using manual drilling methods, and they were laying pipes in the tunnel to take out the workers. All of that stood completed just a few minutes ago, and they quickly swung into action, and they've begun pulling out the trapped workers via the wheeled stretchers. They've been using this strategy the last few minutes, the NDRF personnel pulling out the trapped workers with the help of wheeled stretchers tied to ropes. Remember, this happened on the 12th of November. From the 12th of November to now, what a journey it has been, and how many difficulties these 41 people may have saved, only they know, and only will they be able to share it with the entire country once they're out, once they've healed, once proper medical attention is given to them. In a few days, perhaps, we'll be hearing all of those stories from these brave men. This happened on the 12th November, like I said, when a section of the tunnel between 205 and 260 meters from the Silkyara side had collapsed. And ever since, we've seen the rescue teams engaged in the non-stop operations to rescue them. Close to, let's say, the 12th or the 13th day, there was a little hope that they may be saved any day now. But given the kind of technical challenges, it did become a difficult task. Today in the morning is when we heard of the good news of how it was about 5 meters left, the last 5 meters before the rescuers could reach the trapped workers. Finally, they're there, and one by one, they're being pulled out of the tunnel. Those are the latest visuals we keep up with. The right side of your screens, you can see how the manner in which the workers trapped inside are being pulled out one by one. This may, though, take some time. As the NDMA officials have also been highlighting, it may take about 3 to 4 hours to bring all of them back, to pull them all out. Medical aid, as we speak, is being given to some of them being taken to the ambulances parked right outside the tunnel. As you can see, apart from this, remember how we've been clearly told, and our reporters have been suggesting, that a temporary medical facility has also been set up inside the tunnel, right at the entry of the tunnel, where immediate medical aid is being given to those who have made it out of the tunnel. So those are the kind of details that are now trickling in. 12 workers in the latest have been rescued. So from 4 to 12, the action is only picking up. The nation today is so very relieved at the work, the kind of bravery that these 41 men have shown, and one after the other, they're making their way out of the tunnel. From 4 to 12 now, 12 workers in total have been rescued. And that's why we see the kind of activity we are on the left side of your screens, where the live visuals are now currently coming in from right outside the mouth of the Silkyara tunnel side. You see ambulances parked, a lot of rescue officials currently engaged in those efforts, and one by one, each of them is being pulled out. The right side of your screens, of course, are visuals of, inside the pipe. That's the manner in which the workers are being pulled out. We've been talking about the strategy that is being adopted to, remember, they're being pulled out. The trapped workers are being pulled out with the help of wheel stretchers, which are tied to ropes. This was very clear since the very beginning. Of course, at the end of the rescue efforts, we did see how instead of the auger machine, the rescue team had to shift its focus to manual drilling. That was the only option left with them. They were keeping an option of the vertical drilling open as well till earlier today, when they finally decided it's going to be manual drilling. It's going to be experts who are going to go ahead with the manual drilling process to reach to the ones trapped on the other side. And finally, a few minutes ago, we did see that happen. We did see the rescuers finally reach the trapped workers. के नारे भी यहाँ पर सुनाई दिए हैं। हर हर महादेव के भी नारे अलग अलग जगहों पर लग रहे हैं, जो हम तक जानकारी पहुंच रही है, और प्रॉपर मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। टनल के अंदर जो देखिए
टनल के अंदर जो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल है, जो 6 श्रमिक बाहर निकले वहां पर उनके वाइटल्स चेक किए जा रहे हैं। और पहले ही हमने दिन में बताया था कि 8-8 श्रमिकों को बाहर निकालकर फिर उनके वाइटल्स चेक किए जाएंगे। और देखिए आसपास यहाँ पर पटाखों की गूंज सुनाई दे रही है, पटाखे बज रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है। यहाँ के आकाश में जो तस्वीरें अगर हम तक पहुंचेंगी तो वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये ऐतिहासिक मौका हिंदुस्तान के इतिहास में, निश्चित तौर पर इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, इतना मुश्किल ये रहा पिछले 17 दिनों में, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन अपनी सफलता की कहानियां लिखना शुरू कर चुका है। तमाम एजेंसियां अपनी सफलता की बातचीत कर रही हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी तस्वीर। धीरे धीरे एम्बुलेंसेस बैक करके टनल के गेट की ओर ले जाई जा रही हैं और जो श्रमिक निकाले गए हैं, चूंकि मुख्यमंत्री धामी और वीके सिंह इस मेकशिफ्ट हॉस्पिटल में खुद मौजूद हैं, वो इन श्रमिकों से बातचीत कर रहे हैं। वहां पर जो डॉक्टर्स और मेडिकल की टीम मौजूद है वो उनके बॉडी वाइटल्स को चेक कर रही है। उसके बाद इन श्रमिकों को इन एम्बुलेंसेस के जरिए लेकर जाया जाएगा चिन्याली सौंड उन्हें रखा जाएगा। 41 बेड वहां पर रिजर्व करके रखे गए हैं। वहां पर डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की टीम लगातार मौजूद है। टोटल 6 श्रमिक, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी तस्वीर यह है कि कुल 6 श्रमिक बाहर निकाले जा चुके हैं। सभी आराम से बाहर आ रहे हैं और जब वो टनल से बाहर निकल रहे हैं तो ये भी जानकारी है कि वो विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। यहाँ पर अनाउंसमेंट भी शुरू हो गई है कि गाड़ियों को कैसे लाइन अप करना है। ये जबरदस्त तरीके से हलचल सिलक्यारा टनल के बाहर, उम्मीदों का निकास द्वार, इसलिए क्योंकि यहाँ से जिंदगियां सुरक्षित बाहर निकल रही हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी तस्वीर।